digital properties, moneycontrol.com, First Post and News18.com. Thank you so much for this. My first question, this is your fifth budget. You were navigating two epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharamanł, and how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. You're starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the as I say, anubhav, going through that, and also to look back at it now when you're probably slightly out of it. It's very difficult to describe in, let's say, a short, brief answer. I can understand. But yet, if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially, we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering, or even those who are observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, weigh it for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. Yes. So that was carried on. But we may do so many things. We may have a stable leadership, clear-headed leadership which stands by us and gives us the guidance under the Prime Minister. And we may come up with the proposals and also launch some specific schemes at that time to benefit, to give relief and so on. Eventually it is the way in which the people of India have absorbed it all. Absorbed it and found best ways to go around it with this kind of a succor which is coming from the government, or some hand holding which is coming from the government. May not be adequate, but so the credit goes to the people of India for having so been in clued position with the government's every decision making, and kept pace with it all. And that is why today we are where we are. Entirely the way in which people of India have absorbed whatever has been done from the government side and put it to effect in the ground. No, you make a very important point. I think you never gave up on reforms in the last so many years. Despite, come what may, pandemic, war in Ukraine, and that I must concede. I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now, in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today?
Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Oh, why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results, and so on. Only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying our understanding was this and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it because the results would have been very different. Right. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. So Nirmala ji, if I look at this budget, coming to this budget, the central theme, and you've elaborated, you've articulated it in your speech subsequently as well, but I would still like to ask this question, that there is a big push to capital expenditure on one hand, on the other you've also given a lot of money into the hands of the middle class and the rich, so that there is a consumption boom. All this while keeping the fiscal discipline in place, as you had promised, 5.9%, so that's giving some comfort to everyone. What I want to understand is, what are the few outcomes, big outcomes that you're looking at from this budget? If well executed, if the states and the center work together, I expect tourism to really see a sea change. Flow of people coming in both from one other states and also from abroad. It should actually be a good way of keeping the economy active. If that is going to be this year and also medium term, I also see the momentum that PM Vikas scheme is going to come up with. Because what it does, at least from the way in which I have done this work on understanding that scheme and to see how best it can be tailored, it touches that segment which is sort of self-employed, which has skills, which may be traditional skills, but which are very productively used, and that itself has a huge market, niche market of its own. If by launching PM Vikas, we will be able to touch upon a large section, not confined to any particular few castes which go by the description Vishwakarma, but we are including everybody who uses his hand with some tools, produces things. That's a huge layer which doesn't get covered under A scheme or B scheme or C scheme. Now we are touching them. We are actually giving that material difference of receiving better attention, better raw material, better marketing, better professionalized way of aggregation and so on, with better fair rated credit from bank and so on. I think that layer which has remained unseen, untouched till now, but very recognized because of the quality of products that they produce, will now make a big difference to us. Equally, the push on green is not going to be any less. In every sector, there's been provisions made in the budget for them to do the transition from depending on fossil fuel to a renewable energy source based fuel. And that will touch every walk of life, not just farmers, not just women in household, both from the point of view of user and also producer. You will generate enough power for yourself and be able to also sell it. And the final but most important, I would think, is the way we are going to shake up and also give life to the self-help women's groups which exists in the rural parts of the country. Some states have extraordinarily done well on SHGs in the last few decades. It's not as if they have been formed only today. A couple of decades they've been on the ground. 81 lakh of them groups exist, and it is they who we are now trying to aggregate, bring them together like clusters, see what they want to do in terms of production or services. For instance, I just bring in a very private sector example. Lijjat, the papad, after all, was a women's
somewhat self-help group. Look at the kind of product, the quality, the branding, the perception about what is legit can always be superior in quality. There's never a compromise on it, and people seek it, even though from the general papad pricing it is slightly higher in price, but still people prefer it. So like that, SHGs, and I don't want just to end with the papad making, it should be everything else also. So depending on the skill sets available, the raw material available, we want to make sure that SHGs do come in to benefit from government policy and also through digital marketing, run professionally as well. That's interesting. Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. The opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. And the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, yes. And also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have said, and I've again read it through the media. They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are, even now with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the financial stability boards meeting, which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem, Indian banking sector today is at a comfortable level, with their NPAs coming down to absolutely low levels, recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains as before an absolutely well-governed, stable government, and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the
Investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. Thank you. That's very reassuring coming from the Finance Minister. Let me move on to the next question around the budget, and this is to do with the economy. Is the current recovery due to pent-up demand, or do you think that this will be sustained? I think it will be sustained because the pent-up demand argument was very right nearly 4-5 quarters ago, when post the Omicron we were coming back. People thought 2022 festival season was driven by revenge shopping, yes, pent-up demand and so on. But that pent-up demand won't stretch itself for more than one season, if you want to, take it that way. 2022 festival season was in its normal course, and there was no exaggeration in the markets or even in consumption. So I think it has now reached a level where it will sustain itself. No, I asked this question also because the rural demand is still tepid. Looking at the commentary coming from FMCG companies in India. Also, if we look at the work under the Manrega scheme and the and FMCG results, I asked this question in this context as well. Can aggregate demand be more robust? I'm sure you observe the Indian economy as well, yes, in all its great detail. Demand doesn't remain stable, and then it doesn't remain only going upward. It does come down sometimes and does go up some other times. In fact, at that time, during the pandemic, even during the lockdown, most of us felt the rural demand is very high, and what could explain it? We thought that the farm outputs were very good, and as a result they were having quite a few money in their hand, and therefore they were able to sustain it. So that happens soon after the harvest. But rural demand even today, in terms of the people who are in the farm equipment manufacturing areas, are quite comfortable with what is going on in the rural market. It's not as if demand has affected them. So people are purchasing equipments to do their tilling or farming activities. That's one. I'm not just talking about tractors, but even the other equipments which go in. One. And second, also rural demand, which is FMCG related or your daily consumption related items. Your GST revenues, whilst I don't want to say that revenue GST going up is purely on rural, it may be urban and rural, but it means that it cannot be maintaining a sustained level if one of the segments, rural or urban, really fall down drastically. So I don't think it's worrisome, if at all, any drop. The RBI governor says that the worst of inflation is behind us. So can the RBI then take a more relaxed view of monitoring, tightening and support growth in the coming weeks and months? Well, I realize that if I do comment, it will look as if I'm guiding the RBI or anything like that. No, broadly speaking. But I suppose, yes, the way in which inflation has come down, both by RBI's action and by the government's action, and the government's action has been steady and at it for some time. So I expect, since the fall in the inflation, it doesn't seem to be just a momentary or a 1 month affair. It should sustain itself in the process of coming down, and therefore they should, and you're right, therefore there shouldn't be that much pressure on the central bank to keep the pace of increasing the rates. But the MPC will take a call. Of course. Any concern that you feel is there because of the twin deficit problems?
It's not as severe as before. Yes. Yes, when exports come down, you're going to have the current account deficit. But it's also now suddenly going up as well as it was before, a couple of months ago, one. And second is also the import. Imports also keep slightly going up sometimes, but it's also coming down. If these two factors are primarily the ones which we have to concern ourselves with, monthly fluctuations I say. Yes. Fluctuation should not worry us, but if every month there is a steady decline and there doesn't seem to be a sign of increase or coming upward, uptick as you would say, if there is no chance of an uptick predicted in the next few months, then I think I should worry. But monthly looking at coming down and going up need not worry us so seriously. Okay. So next year the centre in states will spend rupees 13.7 lakh crore as capital expenditure. By any account, it's a phenomenal number. Capacity utilization in the manufacturing sector is at about 72%. My question is, when do you think that the private sector will enter this virtuous cycle of capital spending? They are in it already, I would think. There has been a minor uptick. But I've been explaining this. I'm not sure if industry is explaining it as much, but I read it. So I keep read it in the sense my inferences based on the kind of discussions which happen. India's industry, the old India industry as well as the new, which is the IT related industry, software and so on, both old India industry and this, are transitioning also with the energy related matters, are transitioning also in the way in which their shop floors are operated. So the investment that they make is not to create one more unit of what they already have. The investment that they have to make, and therefore the conscious decision that they have to take, will now also look at not just expanding existing capacity the way it is, but also looking at bringing high technology, Web3, robotics, 3D printing and so on. So that together with moving towards more renewable energy use, making a green product of what they are making. For instance, steel industry is facing huge barriers in Europe. Now, their business of having to invest and expand now would be not to just produce more steel, but to produce green steel. So the investment there has three new dimensions which have never been into consideration earlier. Invest and produce green, produce also with the efficiencies of technology. So all this when comes into play, when your decision making is being done, does take time and more resources. So I would want to give that advantage for India's private sector, that yes, their process is going to be somewhat more complicated in terms of taking the decision, but I think the atmosphere is conducive for that on all grounds, technology, green and so on. I'm kind of curious that while you've given a boost to capital expenditure and increased outlay to PM Awas Yojana, you've also cut the Manrega budget by almost 33% or 30,000 crore. Why have you done that? Actually, the answer lies in your own question. Okay. PM Awas Yojana is also to be done by workers in the area, rural area, who normally would have gone for, let us say, in the absence of this, would have gone for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. Right. That's one answer, because even this has got to be done by people in the rural areas who are looking for jobs, just as Jal Jeevan Mission also goes through rural works. So they have these opportunities as well, which are coming not in a small incremental change, 6% increase, 79,000 crores for PM Awas, and also Jal Jeevan also getting a huge allocation. So these two also are there along with me. Second, Manrega is a demand driven scheme.
the more people come saying we want the job, we give them the work. So what is stated at the budget time estimate tends to keep adding to its resources or demands based on what comes from states. I need more. Then we add more to it and go to the parliament with a supplementary demand. So if you see the last 3 to 4 years, inclusive of the COVID year, naturally, yes, the BE number and the RE numbers are so different in that the RE is much higher. And if you now go back to the last 2 years where the actual numbers are available, BE, RE and the actuals, you will see the actuals are lots more than the BE, and in some cases exactly as much as the RE, which is enhanced, or even better than the RE in increased amount when you realize it in the actuals. So you end up spending a lot more even as you're going on. So I'm a bit now worried that this is becoming a staid question. Manrega, you cut it. Just see the pattern for the last 3 years. It starts with a number at the BE, keeps going on because it's demand driven, and when the supplementary demand stage comes, it's actually a lot more. Yes. So more opportunities have been created. So that's right. Yeah. So I agree. The real average GDP growth rate is 6.5%, as the economic survey says. With a little more reforms, the survey posits that it could even be a little higher at 7 to 8%. Now, what is the realistic and the desirable sort of growth rate for India if it were to become, the third largest economy in the world by the end of this decade? Desirable is one thing, but that desirable number will have to be tempered down by the global realities. Yes. The kind of uncertainties with every economy in the world faces. I don't think any one economy is so immune that the global volatilities don't affect them. So every economy is affected, particularly for a country like India, which for at least 2 critical items entirely depends on imports: fuel, fertilizer. So when you're looking at importing that many big ticket items, your uncertainties are lots more and lots more pronounced. But even provisioning for that and building a budget, we have definitely ensured that we will be not as much be affected by such uncertainties as would any other country be. And therefore the numbers that we've given for the growth is very realistic. Right. One thing that struck me this time when I was listening to your budget speech was the absence of any mention of disinvestment or asset monetization. Why was that? Why has that at least seeming to take a back seat in the last year or so? No, it is still there in the budget documents. Right. It may not have been a part of my speech, but it is in the appendix to the speech. It's also in the rest of the documents where we give the actual numbers and the activities which are going on and so on. See, the cabinet has after all taken a call that certain companies will have to be privatized, and that motion has the approval of the authority concerned, which is the cabinet. So the process goes on. झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना पाइखाना टांकी मिलता टुकड़ा कागज को नहीं सारा राज्य में चर्चा। नव दास को हत्या करने दिन अभियुक्त एएसआई गोपाल दास को थाना को अणा सुजोग देखी पाइखाना निज पाखरे हाथलेखा चिठी को चिरी फ्लाश कर गोपाल कहुच्छी कागज में लिखा अच्छी कहीं नव दास को हत्या कले गोपाल जांच राज्य फोरेंसिक लैबोरेटोरी टीम झारसुगुड़ा पहुंची। टीम मध्य अच्छा हाथलेखा जांच कर विशेषज्ञ जो मैंने कागज में हाथलेखा को जांच करेंगे गोपाल ना स्पष्ट कर आज यह मामलें किसी ठोस प्रमाण मिल पारे जहां मामला को निर्णायक मोड़ ने मंत्री नव दास को गुलिकांड घटनार तदंत बेले पुलिस को एक गुली मिलता क्राइमब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। जबत गुली एक बलिष्ठ प्रमाण बोली क्राइमब्रांच कही। एक गुली नवंक देहरे बाजी
पायखाना टांकी मिलिथिबा कागजर टुकुड़ा को नहीं एबे घंटा चकटा गतकाली झारसुगुड़ा विमानबंदर थाना पायखाना टांकी बाहरी कागज टुकुड़ा को नहीं तदंतकारी दल रखी अनेक आशा एथिरु नवदास मर्डर मिस्ट्री को खोलिबा लागि तथ्य प्रमाण बाहर करबा पई आशा बांधिछि क्राइमब्रांच सेथिपई पहुंचुछंती साइंटिफिक टीम हाथलेखा जांचकारी दल किंतु एही टुकुड़ा को नहीं उठिछि अनेक प्रश्न कहा जाउछि एही कागज टुकुड़ा हेउछि गोपालंक हाथलेखा चिठीर जेउथिरे से नवदास को काहींकि मारिथिले ताहा लिखिछंती जदि ए कथा को विश्वास करा जाए तेबे एबे प्रश्न उठुछि कोनोसी अपराधी को धरिबा बेले तांकु संपूर्ण खानतलाश करा जाए गोपालंक को संपूर्ण जांच करा जाई नथिला कि जदि तांको पाखरे थिबा अन्य समस्त जिनिस जबत करा गला चिठी को छाड़ी दिया गला काहे जदि से समस्त को हत्यार कारण संपर्क में चिठी द्वारा जणाइबा पई चाहुथिले तेबे याकु पायखाना टांकी रे नष्ट करिवे काहे से चिठी रे प्रकृत रे कोन लिखिथिले गोपाल जहा तांकु वर्तमान थारु आउ अधिक असुविधारे पकाई थांता हजार हजार लोकंक आखि आगरे जने मंत्री को हत्या करिबा परे से समस्तंक ठारु आउ कोन लुचाइबा पई चाहुछंती ए सब प्रश्न एबे समस्तंक मनरे सृष्टि करिछि अनेक द्वंद्व यार उत्तर केबे मिलिबो ताकु ही अपेक्षा नवदास को हत्या करिथिबा अभियुक्त गोपाल दासर हेबो हैंडराइटिंग टेस्ट जबत कागज टुकुड़ा को नहीं कौन जानिबा पई चाहुछि क्राइमब्रांच लिभि जाइथिबा चिठी को केमिति पढ़ा जिवो संगृहीत टुकुड़ा कागजरु केमिति रिकवरी हेबो अक्षर लिभि जाइथिबा कागजरु अक्षर उद्धार करा जिवो केमिति ताकु नै समस्तंक मनरे प्रश्न उंकी मारिथिबा बेले न्यूज 18 ओडिया करिछि यारो लाइव डेमो आम प्रतिनिधि दीपक सामल भेटिथिले राज्य फोरेंसिक लैब रो पूर्वतन डीएसपी तथा हैंडराइटिंग ब्यूरो एक्सपर्ट चिरचंद्र पति किंतु अक्षर नाही हां अक्षर नाही अक्षर केमिति अक्षर से स्क्रीन रे गोटे केस करथिली मु बुझले गोटे कागजटा गोटे एनवेलप रे पोस्टल रे ये हितला मु कहली एई कागजटा एई एनवेलप रे पोस्ट हे नाही आगे इन्वेस्टिगेशन केते लीड कला देखंतु गोटे कागजटा पोस्टिंग हेछि से देखै छि गोटे डाउरी टॉर्चर केस रे मु कहली एई कागजटा ए एनवेलप रे पोस्ट हे ता माने प्रूफ कोन हला से कागजटा फ्रॉडुलेंट कागज बुझि पले तो पोस्टल सील इंप्रेशन अछि एटा दंतु 4 फोल्ड हेछि एटा 4 फोल्ड हेछि एनवेलप भीतर पसछि एनवेलप भीतर पसला एनवेलप भीतर पसला जदी बुझी पाले रे ताले कोन हो जते बेले ये मरा जीवो स्टाम्प मरा जीवो जदी तळकु तार ऊपर सील तळकु आसिला ताले कोन हो सब पेपर से सील इंप्रेशन थिवो बुझी पाले तो सब पेपर रे ए सील इंप्रेशन नथिला तळे थिला इंप्रेशन बुझी पाले तो जिंस ए पेपर नथिला किछि इंप्रेशन इंडेंटेशन तळे तळे थिला इंप्रेशन अर्थात मु कोन कहली ए जो सील इंप्रेशन एनवेलप ऊपर जो मराला ता तळ पर्यंत थिला तळे थिला 4 फोल्ड रहिले ये निश्चय प्रत्येक सीट रे मध्य इंडेंटेशन आसीबो तो प्रत्येक सीट रे किछि इंडेंटेशन नाही मु ताको एग्जामिन कली साइड लाइट रे हमर साइड लाइट सिस्टम अछि साइड लाइट देले ए इंडेंटेशन ता पड़ी हो बुझी पाले पड़ी हो पढ़िला पर देखिली सब पेज को एनालिसिस कली कोनोसी पेज रे इंडेंटेशन आसिला नै तने तो एटा बर्तन आपन को ए सीटटा आपन को से चीरी देला आपन टोन कर दिया एमती करी के वर्तमान ताकू ये कर दिया देखि ताकू पानी रे बसते आ पर कोन करा जीवो आमे प्रथमे ई जो सीट सब पाइलु ए सीट को आमे बर्तन खोलिबु खोलला परे ताकू रखिलु ई जो एजेस अछि ए एजेस सहित को एजेस मिसुची आगे देखिबो अच्छा से टुकड़ा को आनिबु ता भीतर बाहर करिबु बर्तमान देखो ये सब एज अच्छी यही एज को जो एज मैचिंग अच्छी पकईबू आ भर टुकड़ा सब बाछू धरतु ये टुकड़ा को बर्तमान बाछिलु यहाँ देखो एजेस कौन अच्छी देखो ता संगे लेखा भी थी देखो ये देखो लेखा अच्छी ये लेखा कोइंसिडेंस हम एटा जोड़ी हे गला किंतु अक्षर नाही हां अक्षर नाही अक्षर केमिति अक्षर को वर्तमान कोन होची आमे ई सीट को नै कि हमर जो इक्विपमेंट अछि से इक्विपमेंट रे ताकू नै कि थोइबु ता तळे अच्छा से इक्विपमेंट एमति बडो इक्विपमेंट अछि ता भीतर एमति बॉक्स भलिया हिक अछि ता भीतर डिफरेंट लाइट कंडीशन अछि हां अल्ट्रावायलेट लाइट अछि आईआर लाइट अछि ता परे डिफरेंट फिल्टर्स अछि जहाँ पर कि जो रेंज रे सेटा विजिबल हबो एमति बडो स्क्रीन हमर अछि से स्क्रीन रे आमे ताको एनालिसिस करी एवं बड़ फॉर्मेट तक बाहर करी सेते बेले कोन हबो सेटा विजिबल फॉर्म को आसला पर आमे ताको सेव करिबो
से इमेज को सेव करके ताको डायरेक्ट हम प्रिंट आउट प्रिंट करी अच्छा से प्रिंट को लेके आमे तेनिकी परीक्षा करी प्रोफेसर सर एई कागज रे हां किछ लेखा थला लिभि जाई पूरा किछ और नाही एठी ऐसा आउ तो विजिबल हबो जदि थिबो इंक पार्टिकल विजिबल हो जदि इंक पार्टिकल थिबो इंडेंटेशन भी थिबो ता धरे आमे लेखिला बेल मते गोटे प्रेशर रे लेखुछु ना से प्रेशर को पुनी साइड लाइट रे देखा दिबो सर को हाउ जे किछ लिक्विड किबा केमिकल अछि ना केमिकल केमिकल कोन से एग्जामिनेशन हुए ना डायरेक्ट ताको कोन से एविडेंस और नष्ट करा जाय जहा थाए एज इट इज थाए हम हैंडराइटिंग मोर रे कोन से केमिकल व्यवहार करा जाय ना फिजिकल मेथड रे सब एग्जामिनेशन करा जाय फिजिकल ये रे हमर इक्विपमेंट सहारा नहीं आमे डिफरेंट एनलार्ज करी से डॉक्यूमेंट को ये करके तार लाइट सोर्स रे हमर लाइट अछि लाइट सोर्स देई से लाइट सोर्स आमे ताको फिल्टर देई ताको आमे तार लेखा रे जोटा विजिबल फॉर्मेट न थाए सेटा विजिबल को आनी ए पेन से लिखि दियो बॉल पेन रे एटा देखो तू बॉल पेन जनरली नॉट वॉशेबल इंक्स जनरली वॉशेबल कम हुए निश्चय इंक पार्टिकल थी आजिकल जो प्रकार गोटे गोटे इंक आसूची जोड़ा कि वॉशेबल इंक से हुए तो एविडेंस मिलवा बहुत कष्ट निश्चय कहीं ना से वॉशेबल हो जाइए इंकटा तेणु ता इंडेंटेशन भी कम थी से पेन गुड़ा जनरली प्रेशर भी बहुत कम यूज हुए तमर सर ए बॉल पेन लिखिबा ए मन ए अक्षर पानी पड़ले सर लिखि जो नहीं बॉल पेन जनरली पानी रे पड़ले सहजरे लिखि नहीं किंतु इंक पेन रखले इंक पेन हले इंक रे जोटा वॉशेबल इंक जदी थिवो हुए तो लिखि जाय थेबा अच्छा अच्छा किंतु जनरली हमर लोक माने सेमे तो जानि पारु नहति सेमाने सी पुलिस अफसर हले भी सी जानि नथि कोटा वॉशेबल इंक कोटा ये इंक से केबे भी सही एंगल ले लिखि नथिबे कदा मु भाबुची क्लू थाई पारे पर जते संभव क्लू थाई पारे क्लू मिलु मध्य एवं सत्यासत ए केस बाहर एते बड़ मंत्री को जते बेले गोटे मर्डर हेची मंत्री को ये रे आमे चाहूछु केमिति हो क्लू किछि बाहर एवं क्लू रे एविडेंस सी हो तो दोष न करि थाई पारे कि अन्य जन भी दोष करि थाई पारे ता भी कहि हेबो केबे भी कहि हेबो से कहा द्वारा प्रवर्तित हेबो तो हुए तो दोष करि थाई पारे ता भी हिताई पारे आमे एठी कहि बुगिंतिरा से कथा किंतु से सब जदि एविडेंस सब मिसिबो एकत्रीकरण करा जिवो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तार फाइंडिंग टा पाई परिबो ठीक आकार एटा कोर्ट रे एक्सेप्ट निश्चय डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन संपूर्ण बारे एक्सेप्ट आमे तार रीजन दे के कहू अच्छा आमे एटा कारण दर्शाई मते दर्शाई कोर्ट को कोर्ट जदि हमको सेठी एग्जामिन करबो आमे पूरा भलो भाव जेमति आपन को जेमति मु बर्तन बुझेबा को चेष्टा करछि सेठी मते कोर्ट रे समस्त आगरे मु ताको बुझेबी मने करो ये पूरा संपूर्ण रिकवर हे गला सब ठीक गला अक्यूज कहबो मु लिखिनी एकुज कह लिखि जदि एकुज लिखि नहीं कहबो हमरा कहू लिखुज कहिने भी होबो नहीं न कहले होबो नहीं से माने परीक्षा करिया को बाध्य अच्छा एक्यूजर स्टेटमेंट अनुसार किछि फाइंडिंग होय नहीं आधार एविडेंस को नहीं सब फाइंडिंग हुए एक्यूज तो कहूँ मार देछि माने मार देछि कोन हमें प्रमाण दबाना मारिछि ना नहीं पर मुहूर्त से मना करियो ना माननी आमे ता द्वारा तथ्य संग्रह करके देबु जहा फल कि सी मारिछि कहवाटा कि न कहवाटा को किछि रहइबो नै अन्य मानक थ्रोर अन्य एविडेंस आकार रे से मारिछि बोली प्रमाणित हो ओके ठीक अछि नवदास हत्या मामलार तदंत नहीं डीजीपी सुनील बंसल प्रतिक्रिया देइछंती कंप्लीट कंक्लूजन को आसीबा पई टिके समय लागिबो बोली कहिसंती डीजीपी से कहिसंती जस्टिस दास को मॉनिटरिंग रे तदंत चालू रहिछि एभली मामला रे तदंत रे पूर्णता आसीबा पई टिके समय लागिबो प्रथम दिनरु तदंत पई निर्देश दिया जाइछि सबु जिनिस 2 रु 4 दिन रे कहि हेबो नाही केंद्र गृह मंत्रालय सहित जोगाजोग रे अछु एवं सेमाने सहयोग करिवे बोली कहिथिबा कहिसंती डीजीपी सेहि भली घटना रे नवदास को पीएसओ को सस्पेंड करा जाइछि कार्य रे अवहेला नै तदंत हेउछि से कार्यक्रम पर नवदास को सुरक्षा दि जाइछिला बोली कहिबा सह एबेठू किछि कंक्लूजन कहिहेबो नाही बोली कहिसंती पुलिस महानिर्देशक सुनील बंसल जो एक टाइप रो क्राइम थाए से थरे सबो जिनिसटा 2 दिन भीतरे के 4 दिन भीतरे के ही जानी पारिबे नै और पूरी जानिबा पाई आमे जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी अछि तांको हमें संपर्क करिछु मु निज जो केंद्रीय गृह मंत्रालय अछि तांको अधिकारी संग कथावार्ता कली से माने कहले कि ए भलो तदंत पाई सेंट्रल गवर्नमेंट रो पूरा साहाय्य जहाँ दरकार हबो सेटा पूरा पूरी दिया जिवो एंड जहाँ मु जानी छी
खूब शीघ्र आमर जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी से किसी टीम आसी पारे सीएफएसएल रू किसी टीम आसी पारे हमारा जो निजर टीम अच्छी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टीम ऑलरेडी से ठीक अच्छी तेणु जहाँ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर्तमान सुधा बाहरी छी से जो आप जानते टॉयलेट रो जो पेपर बाहरी छी तांको हैंड राइटिंग कौन अच्छी ते से केते पुराना कागज अच्छी के कौन अच्छी सेटा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ना हेले ता उपरे किछि राय देबाटा किछि ओपिनियन देबाटा प्रीमेच्योर हबो सेटा जमा उचित हबो नहीं और तदंतरे कौन केते एंगल आसुछि केमती से प्रोसीड करिवो सेटा जेहेतु वर्तमान रिटायर्ड हाईकोर्ट जज तांको मॉनिटरिंग अछंती सेति पई मोर कहबाटा कि कौन दिशा को जाउछि कौन दिक को जाउछि कि एटा एमती फाइनल अछि सेमती किछि फाइनल नाही गुड इन्वेस्टिगेशन रो गोटे प्रिंसिपल थाए दैट ऑल ऑप्शंस आर ओपन हमें माइंड टा को क्लोज करिबु नहीं और जहाँ विषय को नहीं करी जह कहीं भी किसी प्रमाण आसीबो कि किसी इंडिकेशन कि किसी क्लू आसीबो हमें तांको लॉजिकल कंक्लूजन को नहीं जाओ तांको हमें देखिबा कि से प्रमाण टा कि से क्लू टा कौन इंडिकेट करूछि तेणु से एंजॉय हमें करूछु ता छाड़ी करी टू एंश्योर कि काली के ही कही पारिबो नहीं कि से लोको जो सेठी की थेले जेहेतु ए केस रे अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड अच्छी से जने पुलिस ऑफिसर थिला वर्तमान तो डिसमिस में करी छु ताकू आगु पुलिस ऑफिसर थिला टू एंश्योर एंड टू सेटा जेमती दिसिबो समस्तन को दिसिबो कि एतरे किछि इंटरफेरेंस नाही हमें सेठी जो लोग पुलिस ऑफिसर माने डिस्ट्रिक्ट रे थिले तांको हमें ट्रांसफर करी छु टू एंश्योर कि कहीं लोक हम ऊपरे एटा कही पारिबे नहीं कि सेटा सर से माने सेठी के रहले सेठी पई एटा ठीक हला नाही कहीं कि हमें तदंत वर्तमान चले छी तदंतर पर्पज है टू रूल आउट एनी एंगल और एनीथिंग विच वी मे नॉट बी सीइंग राइट नाउ ठीक अच्छी से तदंतटा ओपन रखा जाए अन्यथा तो के करी छी तो एटा तो वीडियो रे छी हमें ताको संगे संगे चार्जशीट कर देबू तदंतर लाभ कौन था तो जो अपन कन्स्पिरेसी कथा कहउछंती किंवा एटा कहउछंती कि एटा कन्फेशन ऊपर कन्विक्शन है पारिबो के नाही ए ऊपर जो जुरिस्प्रुडेंस अछि जो हाई कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट रो जो जजमेंट अछंती से माने अपन कंसल्ट कले एकदम क्लियर अछंती कि mere confession is generally not taken as sufficient for conviction. नवदास को हत्या मामला क्राइमब्रांच तनाघना गुड़ीकांडर षष्ठ दिन में आज क्राइमब्रांच टीम गोपाल को सरकारी क्वार्टर को नहीं जाइए एक बृहत टीम गोपाल को नहीं सरकारी क्वार्टर को जाइए आज गोपाल क्वार्टर में चली तनाघना बड़ धरणर टीम गोपाल क्वार्टर में पहुंची छानबीन आरंभ कर तदंतकारी टीम रे अछंती क्राइमब्रांच अधिकारी और फोरेंसिक टीम सदस्य गोपाल क्वार्टर में हत्या को नहीं किसी षड्यंत्र होइथिला कि मंत्री नवदास को गुड़ी करी हत्या पाई गोपाल दास क्वार्टर में क्यों रणनीति करथिले गोपाल क्वार्टर में यार क्षय खोजुछि कि गुड़ीकांड दिन गोपाल क्वार्टर में केते समय गोपाल क्वार्टर रु केते समय रु बाहरी थिले कोन प्रस्तुति करी घर जाइथिले से सबुरा मध्य तनाघना करा जाउछि एपटे गोपाल पाखरे थिला फुल लोडेड रिभल्वर जहाँ भितर थिला 6टी गुड़ी लोडेड रिभल्वर सहित अधिक 18टी गुड़ी नहीं घटनास्थल को जाइथिले गोपाल दास अर्थात गोपाल पाखरे थिला मोट 24टी गुड़ी जदि सेमिति कोनोसी परिस्थिति सृष्टि होइथांता तेबे एहा द्वारा महा आतंक सृष्टि करि पारिथांते गोपाल एबे जहाँ चर्चा हेउछि एते परिमाणर गुड़ी नहीं काहेकि घटनास्थल को जाइथिले गोपाल दास तांकर आउ किछि उद्देश्य रहिथिला कि गोपाल दास जेन दिन हत्या करथिले बा जेउ दिन ए गुड़ीकांड घटना होइथिला से दिन गोपाल पाखरे थिला 18टी गुड़ी अर्थात रिभल्वर रे लोड होइथिला 6टी गुड़ी एवं अधिक 18टी गुड़ी गोपाल पाखरे थिला अर्थात गोपाल पाखरे सर्वमोट 24टी गुड़ी रहिथिला एवं एते परिमाणर गुड़ी नै गोपाल काहीकि जाइथिले गोपाल कोनोसी बड़ धरणर एक आतंक सृष्टि करिथांते कि जदि हत्याकांड जो भली चिंता करथिले ताहा जदि होई न थांता ताहेले गोपाल आउ कोन करिथांते ताकु नै मध्ये अनेक चर्चा हेउछि कारण एथि पई कि गोपाल पाखरे 24टी गुड़ी रहिबा तार आवश्यकता कोन थिला गोपाल काहीकि एते परिमाणर गुड़ी सांगरे नै जाइथिले
जदि हत्याकांड में कौन प्रकार भूल होता बा करि पारि न थांते बा अन्य कौन परिस्थिति सृष्टि होता ताहेले गोपाल किछि बड़ धरणर कांड करबा पई गोटे चिंता करथिले कि एई चर्चा मध्य वर्तमान सामना को आसुछि। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना पायखाना टांकी मिलता टुकड़ा कागज को नहीं सारा राज्य में चर्चा। नव दास को हत्या करने दिन अभियुक्त एएसआई गोपाल दास को थाना को अणा सुजोग देखि पायखाना निज पाखरे हाथ लेखा चिठी को चिरी फ्लाश कर गोपाल कहुच्छी कागज लिखा कहीं नवदास को हत्या कले गोपाल जांच पर राज्य फोरेंसिक लैबोरेटोरी टीम झारसुगुड़ा पहुंची। टीम मध्य अच्छा हाथलेखा जांचकारी विशेषज्ञ जो मैंने कागज में हाथलेखा को जांच करेंगे गोपाल कि ना स्पष्ट कर आज यह मामलें किसी ठोस प्रमाण मिल पारे जहां यह मामला को निर्णायक मोड़ ने। मंत्री नवदास को गुलिकांड घटनार तदंत बेले पुलिस को एक गुली मिलता क्राइमब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। जबत गुली एक बलिष्ठ प्रमाण बोली क्राइमब्रांच कही। एक गुली नवंक देहरे बाजिथिला ना नाही ताहा स्पष्ट रही बोली क्राइमब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। गत 29 तारिख में नवदास एक कार्यक्रम में जोग देवाक जाइथिबा बेले ब्रजराज नगर गांधी छक एएसआई गोपाल दास गुली करथिला। गोलीटी सीधा मंत्री नवदास छाती में बाजी पिछी पटे बाहरी जाइला। गुलीमाड़ में नवदास मृत्यु होता जो स्थान में गुलीमाड़ होता सेठार फोका मिली समस्त गुली खोजी पाउनी क्राइमब्रांच। 6 दिन है गुली को खोजुची क्राइमब्रांच। तेज घटनार 5 दिन पर गोटे गुली मिलवा नहीं सृष्टि होती अनेक प्रश्न। मिलता गोटे गुली क्यों स्थान में मिली से नहीं स्पष्ट करनी क्राइमब्रांच। गुली को नहीं एबे भी खोलताड़ जारी रही। नमस्कार मु बंदिता। आलू खोलु खोलु महादेव अनेक समय रे बड़ बड़ घटनार खियो खोजु खोजु बड़ प्रमाण मिली थाए। आज आम एक कथा कहीं कहूँ राज्य कैबिनेट रो मोस्ट पावरफुल मंत्री नवदास को हत्या घटनार तदंत एठी जेमिति चालीछि ताहा रहस्य भितर आहुरी रहस्य बढ़ाउछि। क्राइमब्रांच एडीजी अरुण बोथरा को इन्वेस्टिगेशन स्टाइल डार्क सिक्रेट भितर को ठेली हो जाइछि। सुराग खोजिबा आଳରେ क्राइमब्रांच जो मिडनाइट ऑपरेशन कला ताहा सफल होइछि। पायखाना टांकी भितर कागज पाई क्राइमब्रांच। एते जिनिस गोपाल निज पाखर रखिथिले किंतु एयरपोर्ट थाना पुलिस से विषय कौनसी टेर केमिति पाई नथिला। ए प्रश्नर उत्तर जेतिकी जटिल अरुणान कोर तदंत भी सेतिकी चर्चित। तेने पुलिस चाकरी रे बेस अभिज्ञता हासिल करथिबा अभियुक्त गोपाल दास जेरा समय रे केवल क्राइमब्रांच को द्वंद्व रे पकाउछंती। एबे बड़ प्रश्न सुराग खोजु खोजु केमिति राज खोलिबो ओडिशा क्राइमब्रांच। चलंतु एने आरंभ करिबा आजिरो स्पेशल रिपोर्ट। मंत्री नवदास को मर्डर मिस्ट्री तदंत सबुठु बड़ मिस्ट्री। प्रश्न घेर रे राज्य क्राइमब्रांच तदंत। पायखाना टांकी रे करिथिबा मिडनाइट ऑपरेशन कोन सुचाउछि? पायखाना टांकी भितर मिलिथिबा कागज पत्र कोन दर्शाउछि? सेथिरे नवदास को हत्या मामलार कोन रहिछि प्रमाण? ना लोक को विभ्रांत करबा पई ए हेउछि क्राइमब्रांच रो सबुठु बड़ सुपरिकल्पित प्लान। ए प्रश्न एबे साधारण चर्चा हेउछि। हत्याकांडर 5 दिन परे भी मुह खोलु नाहंती पुलिस सीजी। एने क्राइमब्रांच तदंत केवल हाउजाउ करुछि। सेपटे किंतु जेरा समय गोपाल दास को चतुरता क्राइमब्रांच को आक्तामाक्ता करुछि। देखंतु ए रिपोर्ट। मंत्री नवदासंक मर्डर मिस्ट्री तदंतर सबुठु बड़ मिस्ट्री। प्रश्न घेर क्राइमब्रांच तदंत। पायखाना टांकरू बड़ सुराग पाइला क्राइमब्रांच। लोकों को विभ्रांत करुछंती कि अरुण बोथरा एंड को। क्राइमब्रांच सुराग केमिति खोलिबो राज? तारीख 1-2-2023
समय विलंबित राति। चारिआडे सुनसान थिला। अंधार रातिर गार्ड नीरवता मध्य चढ़ी चढ़ी चलता। हठात किछि लोक किछि गाड़ी एयरपोर्ट थाना अभिमुखे बाहरिले। केही किछि बुझिबा आगुरु थाना परिसर रे खोली मध्य चलिले। तेबे एई खोलिबा रहस्य खोलिबो कि नवदास को हत्यार कारण? राज्य सरकार मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर नवदास हत्याकांड को 5 दिन बीती गला। एबे भी राज्य पुलिस और क्राइम ब्रांच हाथ खाली रही। तमाम प्रश्न घेर में हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री घूरी बुलुवा बेले हठात क्राइम ब्रांच एडीजी एक एक्शन समस्त को विचलित कर देछि। देखंतु ए विजुअल। यह कौनसी सिनेमार दृश्य नुहे, क्राइम एपिसोड कौनसी सीन भी नुहे, यह रियल एकदम रियल। मंत्री नवदास हत्या मामलार सुराग पाई एठी उजुला चली। आज्ञा हाँ, ए होछि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना। एठी क्राइम ब्रांच एडीजी अरुण बोथरा टीम करिछि खोलताड़। कौन एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य नहीं थानार पाइखाना टांकी को राति अध जाए सफा करिछि क्राइम ब्रांच टीम। विलंबित राति रे पाइखाना टांकी रे कौन करुथिले अरुण बोथरा एंड को किछि बड़ प्रमाण पाइबा आशा रे मिडनाइट ऑपरेशन करिथिला क्राइम ब्रांच। आउ बहु झाड़ हुआ परिश्रम पर क्राइम ब्रांच हाथ में लगी किछि गुरुत्वपूर्ण कागज खंडी। पाइखाना टांकी क्राइम ब्रांच को मिली गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र। केतेक कागज गोपाल पाइखाना रे फ्लाश मार देथिला। आउ यह जानिबा पर क्राइम ब्रांच आरंभ करथिला मिडनाइट ऑपरेशन। आउ दीर्घ घंटा झाड़ बुहाइबा पर क्राइम ब्रांच हाथ में लगी कागज पत्र जो किसी तथ्य लुचि रही अनुमान करा जाउछे। ना लोकों को विभ्रांत करबा पई क्राइम ब्रांच एभली बाउलिया तदंत करुछे। मंत्री नवदास को हत्या करबा परे गोपाल दास को विमानबंदर थाना रे अटक रखा जायतिला। क्राइम ब्रांच आसी पहुंचवा पर्यंत से दीर्घ समय धरी एठारे थिले। से समय हत्या कारण बोली कुआ समस्त प्रमाणपत्र गोपाल निज पोशाक भितर ही लुचाई रखिथिला। पुलिस से सब जबत करिबारे विफल हेबा परे यार सुजोग नेथिले गोपाल। सबु प्रमाण को उड़ाई देबा लगी से पुणी थाना भितर रचिथिले नुआ षडयंत्र। विमानबंदर थाना रे परिस्थिति जीवा बहाना रे से बाथरूम को जाइथिले। सेठारे लुचाई रखिथिबा सबु कागज पत्र को पाइखाना रे पुराई फ्लाश मार देथिले। स्थानीय पुलिस ए विषय आदौ जानी पारि नथिला। एभली एक तथ्य पाइबा परे क्राइम ब्रांच हठात विमानबंदर पाइखाना टांकी खोलिथिला। अन्यपटे प्रश्न उठुछि जे विमानबंदर थाना को आनिबा परे कौन गोपाल को चेकिंग करथिला स्थानीय पुलिस? ना हाई प्रोफाइल मर्डर करथिबा जने अभियुक्त को बिना चेकिंग रे पुलिस थाना रे रखिथिला। राति अधरे पाइखाना टांकी सफा करी जो प्रमाण पाइछि क्राइम ब्रांच ताहा केते काम रे आसीबो? घटना को 5 दिन बीतलानी तथापि ए बाबद मुह खोलु नांती पुलिस डीजी। घटना स्थल को आसीबा तो दूर कथा ए बाबद पदुटुए हेले कहूना पुलिस डीजी। सेपटे क्राइम ब्रांच रो मिडनाइट ऑपरेशन पाइखाना टांकी कागज खोजिबा परे एबे गुरुत्वपूर्ण तथ्य किछि मिलिछि क्राइम ब्रांच को। आ भितरे सबुठु बड़ प्रश्न होउछि क्राइम ब्रांच रो प्रश्न आगरे आक्ता काप्ता होउछि गोपाल ना एठी तार जो उत्तर रहउछि ताकू नै द्वंद्व रे रहिछि क्राइम ब्रांच। अन्यपटे अभियुक्त गोपाल दास मानसिक स्थितिर फरेन्सिक टेस्ट करने को आरंभ होइछि प्रस्तुति। एने क्राइम ब्रांच पक्षर सूचना दि जाइछि। एथिरे कुहा जाइछि जे तांकर दुईटी टेस्ट करा जिवो, फरेन्सिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एवं लेयर्ड वॉइस एनालिसिस टेस्ट।
ଏହି ଦୁଇଟି टेस्ट संदिग्ध व्यक्ति उपरे करा जाए। फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट द्वारा तदंतकारी संस्था को जड़े व्यक्तिर कपटी उद्देश्य विषय जना पड़े। अन्यपटे लेयर वॉइस एनालिसिस टेस्ट द्वारा संदिग्ध व्यक्तिर मानसिक स्थिति एवं भावावेग विषय जना पड़े। यह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति केउं प्रश्न को चापरे उत्तर देउछि एवं केउं प्रश्न सहजरे उत्तर देउछि ताहा जना पड़े। फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट द्वारा संदिग्ध व्यक्तिर प्रकृत उद्देश्य विषय तदंतकारी संस्था जानी पारे। गोपाल दास सीधा सीधा क्राइम ब्रांच अधिकारी कौनसी प्रश्नर उत्तर देउना, तेणु क्राइम ब्रांच अधिकारी माने नव दास हत्याकांडर प्रकृत कारण जानिबारे सफल होउना। एसहित गोपाल दास निर्विकार भली रोचे और गोपाल दास व्यक्तित्व जमी गोटे निर्विकार परिकार होथिबारु से स्पष्ट उत्तर देउ नथिबारु मुख्यतः कहीं से नवदास को हत्या कला ताहा स्पष्ट करि पारु नाहंती क्राइम ब्रांच अधिकारी माने। एसहित क्राइम ब्रांच अधिकारी माने मध्य गोपाल दास कथा को विश्वास करि पारु नाहंती। एमिति भी कहुई पारे जे क्राइम ब्रांच तदंतकारी टीम को एक प्रकार विभ्रांत करुछंती गोपाल दास। गोपाल पुलिस विभाग में प्राय 28 वर्ष होला काम कलेनी। एथिरु सहजरे अनुमान करिहेब जे गोपाल भल भाव जानिछंती केमिति हुए तदंत एवं अभियुक्त ठारू कथा आदि पई पुलिस कोन करे। वर्तमान जने अनुभवी पुलिस कर्मी को आउ जने पुलिस कर्मी जेरा करछंती, तेणु क्राइम ब्रांच पई एहा सहज हेउ नाही। कुआडे गोपाल क्राइम ब्रांच अधिकारी प्रश्नर अति संक्षेप उत्तर देउछंती एवं बारंबार पचारिले चुप रहउछंती। गोपाल एभली आचरण रे तदंतकारी अधिकारी द्वंद्व रे पड़ जाइछंती। सेथिबे पुलिस गोपाल दुईटी टेस्ट करने को निष्पत्ति नेछि। एथिबे दिल्ली रु फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानकु डका जाइछि। परीक्षा बेले गोपाल और जड़े साइंटिस्ट रहिबे, सेतेबेले गोपाल आचरण किभली रहउछि ताहा स्पष्ट हेबो। सेतेबेले आईक्यू टेस्ट, कार्ड टेस्ट करा जाए। एथिरे मध्य क्राइम रिलेटेड प्रश्न पचरा जाए। चापरे रहउथवा बेले शारीरिक गतिविधि, अंग भंगी, बसिबा ठाणी, कहवा ठाणी केमिति रहिछि, केउं प्रश्नर उत्तर देबा बेले तांका बॉडी लैंग्वेज कोन रहउछि बा से ओभर कॉन्फिडेंस रही उत्तर देउछंती ताकू मध्य परीक्षा करा जिवो। एही घटना ओडिशा रे प्रथम थर होइथिबा बेले एहा सफल हुए बोली कहिसंती विशेषज्ञ। विशेषकर बड़ बड़ संवेदनशील घटना गुड़िकरे एभली टेस्ट करा जाय थाय। हमरो गोटे सॉफ्टवेयर अछि, सेटा को एलवीए सॉफ्टवेयर तो कहउछि। से ताको प्रत्येक शब्द को से एनालिसिस करिवो एवं एनालिसिस करी से शब्द भितरे कोन की प्रकार ता भितर रहला इमोशनल बा मेंटल स्टेट रो स्ट्रेस हला बा तार टेंशन हला बा तार कोठी कंफ्यूजन हला बा से कोठी ओवर एक्साइटेड हला, ये सब जिनस को से डिटेल एनालिसिस करी से सॉफ्टवेयर कहबो जे केई को जगह रे से होय तो चेष्टा करूची सत्यता को लुचेबा को बा तथ्य को प्रकाश करबा को से चाहू नाही, से सब जिनस रे से तार बाहरिबो। जने हाई प्रोफाइल व्यक्ति तथा राज्य सरकार को स्वास्थ्य मंत्री को हत्या सर्वसम्मुख हेला। राज्यवासी को 5 दिन धरी अंधार रखी कौन प्रमाणित करने को चाहूँगी क्राइम ब्रांच। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। खोका अच्छी गुली नाही। मंत्री नवदास को हत्या करने पर ठारू गुली गायब। जेते अंडाळिले भी मिलुनी, कुआडे गला से गुली। सेही संधान रे बालास्टिक टीम तेरे हत्या करिथिबा स्वीकार करिछि गोपाल, किंतु हत्यार कारण क्राइम ब्रांच को कहूनी, जहाँ क्राइम ब्रांच को हरड़ घणारे पकाइछि। देखंते रिपोर्ट। खोका अछि हेले गुली नाही, कुआडे गला गुली। गुली खोजिबारे व्यस्त तदंतकारी टीम।
स्वास्थ्य मंत्री नव दास को हत्याकांड वर्तमान राज्यर सबुठु बड़ हॉट टॉपिक। दिन गड़ी चली ता सांगकु अरुण एंड कोर तदंत मध्य झारसुगुड़ा रे झाड़ बुहाउछि। हत्यार 5 दिन बीती गलानी किंतु काणीचाए भी प्रमाण पुलिस किंबा क्राइम ब्रांच हाथ में एजाए लगिनी। एहारी भितरे नवदास को हत्या करा जायतिबा बंधुक और ताहार गुली को नहीं मध्य एबे देखिबा को मिलिछि बिग मिस्ट्री। कुआड़े गला गुली केवल खोका हाथ में लागिथिबा बेले गुलीर पत्ता मिलुनी। हत्या करिबा परे निखोज होई गला कि गुली ना गुली को गायब करा जाइछि। गत 29 तारिख में नवदास एक कार्यक्रम में जोगदेवा को आसीथिबा बेले ब्रजराजनगर गांधी छकरे एएसआई गोपाल दास तांकु गुली करिथिला। गुलीटी सीधा मंत्री नवदास को छाती रे बाजी पिठी पटे बाहरी जाइथिला। एही गुली मारे नवदास को मृत्यु होइथिला। जेउ स्थान रे गुलीमाड़ होइथिला सेठारु खोका मिलिछि हेले एजाए गुली खोजी पाउनी क्राइम ब्रांच। 5 दिन हेलानी गुली खोजा चलीछि। जदि तळे पड़ी नाही गाड़ी भितरे रहिबा कथा। बड़माल थाना रे गाड़ी को तन्न तन्न करी जांच करुछि क्राइम ब्रांच रो बालिस्टिक टीम। नव दास को गाड़ी को खोला जाउछि किंतु खोजिबा वाला हाथ रे लागिबो तो गुली। गोपाल को मिलिथिला 9mm रो पिस्तल। यार अर्थ नव दास को देह रे 9mm रो गुली लागिछि। हेले घटना घटिबार 5 दिन परे भी एबे भी चलीछि से गुली खोजा। अन्यपटे गोपाल हत्या करिथिबा बंधुक को नहीं मध्य बड़ तथ्य सामना को आसीछि। गुलिकांड पर गोपाल दास को काबू करिबा समय रे जणे युवक गोटिए पिस्तल छड़ाई नहीं ऊपर को देखाई बुलीथिले। गणमाध्यम रे से दृश्य बहुल प्रसारित। एबे प्रश्न उठुची से पिस्तल कहार। चर्चा हेउची एहा गोपालंकर नुहे, एहा हेउची तत्कालीन आईआईसी प्रद्युम्न कुमार स्वाईंकर। सेतेबेलर भिजुआल रु मध्य ए नै संदेह अधिक दृढ़ीभूत होईछि। ये बंदूक कथा जो सामना को आसूची ये बंदूकटी गोपाल को बंदूक नथिला, ये बंदूकटी आईआईसी को बंदूक थिला। तेबे बड़ प्रश्न होउची जे से बंदूक तांको पाखको गला किबोली। जे बंदूक निला पर से किछि मंद उद्देश्य जदि रखि थांते बा से जदि सेही समय जो जेहेतु राग थिला समस्त को मन रे समस्ते गोटे से समय गोपाल उपरे ताको आक्रोशमूलक भावना थिला समस्त को उपरे, तेणु से जदि शूट कर थांते बा जेहेतु भिड़ थिला आ का देहरे मध्ये से गुली लागि जाई थाइता एभले अनेक कथा सामना को आसूची। तेणु वर्तमान दृष्टि रे केवल जे क्राइम ब्रांच तदंत करिबो बंदूक संपर्क रे जानिबो ता नुह, एने पुलिस विभाग मध्ये गोटे इनक्वारी करबा दरकार जे ये बंदूक कहार, ये बंदूक जदि आईआईसी कर ताहाले कोन कार्यानुष्ठान हबो, ताको बंदूक गला किपरि। जदि यह सत तेबे युवकों हाथ को किभली गला बंधुक? कौन पाई बंधुक छड़ाई नहीं थिले युवक? युवक जदि किछि अघटन घटाई थांते तेबे किए रही थांता दायी? संपृक्त युवक एबे केउठी? जदि ताहा आईआईसी पिस्तल होइताए ताहा छड़ाई नेबा सर्वसाधारण रे मारणास्त्र प्रदर्शन करिबा भी एक संगीन अपराध। एबे से युवक जनक केउठी? तांकु क्राइम ब्रांच पचरा उचरा कलानी की? रु अभियुक्त गोपाल दास को बंधुक इस्यू होइतिला। 9mm पिस्तल सह 24 राउंड गुली इस्यू होइतिला। 2020 रे पुराना गुली को बदलाई नुआ गुली दिया जाइतिला।
2022 डिसेंबर रे रेंज कोर्स फायरिंग रे जोग देइथिले गोपाल। एबे प्रश्न उठुछि जे जबत होइथिबा पिस्तल जदि गोपालंकर नुहे तांको पिस्तल गला कुआडी। केउ पिस्तल रु नवदास को हत्या करा जाइछि। एही घटना एबे आहुरी रोचक मोड़ नेइछि। मंत्री नवदास को हत्या अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। केउ कारणरू गोपाल दास हत्या कले ताहा एबे भी अस्पष्ट। केबे एही रहस्यरू परदा हटाइबो क्राइम ब्रांच ताहा भी बड़ प्रश्न। ए सबु भितरे तदंतकारी टीम जदि गुली न पाए तेबे कोन करा जिवो, केमिति गुली को ठाब करिवो क्राइम ब्रांच ताहा भी एक बड़ रहस्य। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। हत्या घटनार तदंत केउ दिगरे गति करुछि? यार भितरे गोपाल दास को हत्या पूर्वर योजना आहुरी व्यथित करिछि। ए संपर्क देखिबा गोटे छोट ब्रेक परे। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना पाइखाना टांकी मिलता टुकड़ा कागज को नहीं सारा राज्य में चर्चा। नवदास को हत्या करने दिन अभियुक्त एएसआई गोपाल दास को थाना को अणाଯାଇଥିଲା। सुजोग देखि पाइखाना निज पाखरे हाथ चिठी को चिरी फ्लाश कर देखला गोपाल। कहुच्छी कागज लिखा अच्छी कहीं नवदास को हत्या कले गोपाल। जांच पर राज्य फोरेंसिक लैबोरेटरी टीम झारसुगुड़ा पहुंची। टीम मध्य अच्छा हाथलेखा जांचकारी विशेषज्ञ जो मैंने कागज हाथलेखा को जांच करेंगे गोपालकर कि ना स्पष्ट होते। आज यह मामला किसी ठोस प्रमाण मिल पारे जहां यह मामला को निर्णायक मोड़ ने। मंत्री नवदास को गुलिकांड घटनार तदंत बेले पुलिस को एक गुली मिलता क्राइम ब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। जबत गुली एक बलिष्ठ प्रमाण बोली क्राइम ब्रांच कही। एक गुली नवंक देहरे बाजिथिला ना नाही ताहा स्पष्ट रहिछि बोली क्राइम ब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। गत 29 तारिख में नवदास एक कार्यक्रम में जोग देवा जाइथिबा बेले ब्रजराज नगर गांधी छक एएसआई गोपाल दास तांको गुली करथिला। गोपाल दास एवं नवदास गोटे पुराना फोटो हेउछि वायरल। गांधी छकरे नुआखाई भेटघाट उत्सव में गत वर्ष दुही को एकाठी देखा मिलता। यह फोटो अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सेपटे हत्या पूर्व मंत्री नवदास को घर चारिकड़े गोपाल दास को पैंतरा मारिबा मर्डर मिस्ट्री को आहुरी रोमांचित करिछि। देखंतु ए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री नवदास को हत्या मामला दिनकू दिन रोमांचक मोड़ नेउछि। क्राइम ब्रांच तदंत स्टाइल घटना को नुआ नुआ खुराक जगाउछि। यार भितर घुरी बुलुछि नवदास एवं अभियुक्त गोपाल दास को फोटो। नवदास को सह सबुठी थिले हत्याकारी गोपाल दास। झारसुगुड़ा जिले में कार्यकाल समय स्वास्थ्य मंत्री नवदास निकटतर होबार अनेक सुजोग पाइथिले गोपाल। ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न कार्यक्रम में जोग देवाक जाउथिले नवदास। ए समय ड्यूटी हो कि साधारण भावे पुलिस अधिकारी होतिबारु अति निकट को जीवा सहज होउथिला। विभिन्न कार्यक्रम में नवदास अति निकट में छिड़ा होउथिबा देखिबाक मिलिछि। देखंतु ए फोटो। ये होउछि गत वर्ष सेप्टेम्बर 18 तारिखर। अवसर थिला एक नुआखाई भेटघाट कार्यक्रम।
संबलपुर अनुष्ठित होता नुआखाई प्रोग्राम सेठाकु मंत्री नव दास जाइथिबा बेले तांको पछरे छिडा होइथिले गोपाल दास। ए फोटो रे सांसद सुरेश पुजारी मध्ये उपस्थित अछंती। ठीक नव दास को पछरे गोपाल दास छिडा होचंती। तेरे सेप्टेम्बर रु जनवरी ए 4-5 मास भितरे कोन हैला जदि पूर्वर किछि शत्रुता थिला से समय हत्या करिवार सुजोग पाई पारि थांते गोपाल दास। किंतु सेमिति किछि होई नथिला जा हत्याकांड को आहुरी रहस्यावृत करिछि। सेहिपरि देखंतु ए होछि आउ एक फोटो। ए फोटो रे नवदास कोनसे को कार्यक्रम रे जोग देबा को जाउछंती। अनेक कर्मकर्ता मध्य साथरे अछंती और सेठार मध्य पुलिस पोशाक रे उपस्थित अछंती गोपाल दास। नवदास हाथ जोड़ी स्थानीय लोक को अभिवादन जनाथुआ बेले गोपाल दास आगे छिड़ा होचंती। तेणु गोपाल दास पुर नवदास को प्राय सब कार्यक्रम रे जाउथुवा चर्चा होउची। कहीं मंत्री नवदास को हत्या ए प्रश्न जतिक रहस्य सृष्टि करुची सेतिकी द्वंद्व मध्य उपजाउची। यार भीतर किंतु गोटिए कथा धीरे धीरे स्पष्ट होउची ए हत्याकांड सुपरिकल्पित। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। हत्या घटना को 5 दिन बीती सारी तथापि पुलिस एवं क्राइम ब्रांच रो हाथ खाली केमिति ढंगरे अरुण बोथरा को तदंत करुछंती जे ए जाय हत्या घटनार सुता खियटी भी पाई पारि नाहंती। आहुरी केते दिन राज्यवासी हत्या रहस्य को नै अंधार रे रहिबे। समय सरीछि। आज पई स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखुछु। नमस्कार। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना पाइखाना टांकी मिलता टुकड़ा कागज को नहीं सारा राज्य में चर्चा। नवदास को हत्या करने दिन अभियुक्त एएसआई गोपाल दास को थाना को अणा सुजोग देखी पाइखाना निज पाखरे हाथ लेखा चिठी को चिरी फ्लाश कर देथिला गोपाल। कहुछि कागज रे लिखा अछि कहीं नवदास को हत्या कले गोपाल। जांच पाई राज्य फोरेंसिक लैबोरेटरी टीम झारसुगुड़ा रे पहुंची। टीम मध्य अच्छा हाथलेखा जांच कर विशेषज्ञ जो मैंने कागज में हाथलेखा को जांच करेंगे गोपाल ना स्पष्ट कर आज यह मामलें किसी ठोस प्रमाण मिल पारे जहां मामला को निर्णायक मोड़ ने। मंत्री नवदास को गुलिकांड घटनार तदंत बेले पुलिस को एक गुली मिलता क्राइम ब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। जबत गुली एक बलिष्ठ प्रमाण बोली क्राइम ब्रांच कही। एक गुली नवंक देहरे बाजिथिला ना नाही ताहा स्पष्ट रही क्राइम ब्रांच पक्षर सूचना दी जाएगी। गत 29 तारिख नवदास एक कार्यक्रम में जोग देवाक जाइथिबा बेले ब्रजराज नगर गांधी छक एएसआई गोपाल दास तांको गुली करथिला। गुलीटी सीधा मंत्री नवदास छाती में बाजी पिछी पटे बाहरी जाइथिला। ए गुली माड़ में नवदास मृत्यु होइथिला। जो स्थान में गुलीमाड़ होइथिला सेठार खोका मिलिछि हेले समस्त गुली खोजी पाउनी क्राइम ब्रांच। 6 दिन हेलाणी गुली को खोजुछि क्राइम ब्रांच। तेज घटनार 5 दिन पर गोटे गुली मिलवा को नहीं सृष्टि होछि अनेक प्रश्न। मिलिथिबा गोटे गुली केउ स्थान मिलिछि से नहीं स्पष्ट करनी क्राइम ब्रांच। गुली को नहीं एबे भी खोलताड़ जारी रही कहुछि मिलिथिबा ए गुलीर जांच हेबो। विशेषकर से गुली नवदास को मरा जाइथिबा गुली ना नाही तार जांच करा। आज जयपुर गस्त करिबा मुख्यमंत्री पूर्वाह्न मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वतंत्र विमान में जयपुर विमान बंदर में पहुंचे। जयपुर विक्रम देव कॉलेज 75 वर्ष पूर्ति अवसर में सामिल हेबे मुख्यमंत्री। विभिन्न उन्नयनमूलक कामर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बिना सुधरे 2टी महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी को ऋण प्रदान करा सहित कोरापुट पर्यटन उपर स्वतंत्र पोस्टाल कभर उन्मोचन करेंगे सीएम।
मुख्यमंत्री गस्त को दृष्टि रखी जिला प्रशासन तरफ समस्त व्यवस्था करा 20 प्लाटून फोर्स और 132 ऑफिसर नियोजित रही। जयपुर विक्रम देव महाविद्यालय को मिला विश्वविद्यालय मान्यता। ए संक्रांत प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनुमोदन प्रदान कर अध्यापक छात्र छात्री और बुद्धिजीवी खुशी प्रकाश कर। स्थानीय बासिंदा दीर्घ दिन दाबी था आज से ही दाबी पूरण होगी विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति कहते। विश्वविद्यालय मान्यता मिलवा पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण कर अध्यापक और छात्र छात्री कहते। विक्रमदेव महाविद्यालय 1947 मसीह स्थापित होता। चलित वर्ष यह महाविद्यालय तार 75 वर्ष पूर्ति पालन कर। विधायक विजय शंकर दास और बांधवी सोमालिका दास विवाह विवाद मामलें विधायक विजय शंकर दास बढ़िला अड़ुआ। बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते। खंडगिरी अच्छी महण महण सुना केवल सुना नुहे हीरा मोती भी अच्छी गुंफा तले सुना अच्छी एमती कहते बाबा तथा पंडित भक्तचरण दास। 2003 ध्यान में बसी बेले यह संदेश मिलता। माघ मेला चलुवर श्रद्धालु